Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to your biology class, grade 10. Today we'll start next chapter, that is chapter number 11, Homeostasis. This chapter is starting from your page number 18 of textbook. Today we are going to discuss two topics in this chapter. First is related to the introduction of homeostasis with some examples, including osmoregulation, thermoregulation and excretion, while another topic, that is the second topic of the day, is homeostasis in plants. So first we are going to discuss the first topic of the day, homeostasis with example. So the first heading is homeostasis, and I am going to define homeostasis first. Homeostasis is basically the maintenance of the internal condition of body at equilibrium, that in balance at equilibrium despite changes in the external environment. So according to this definition, first of all you have to know about the meaning of homeostasis, that is, what is homeostasis. So it is very much clear from your first sentence of definition that it is the maintenance of the internal condition of the body at equilibrium. So this is the meaning of homeostasis, that कि किसी भी बॉडी की इंटरनल कंडीशन या बॉडी की अंदरूनी हालत का इक्विलिब्रियम पर या बैलेंस में बरकरार रहना होम्योस्टेसिस कहलाता है. एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ योर डेफिनेशन इज़ डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी अगर वो इंटरनल कंडीशन इक्विलिब्रियम पर है या बैलेंस में है तो चाहे बाहर यानी बैरूनी जो आपकी इन्वायरमेंट होती है, आपके जिस्म से बाहर की इन्वायरमेंट होती है, उसमें जितनी भी तब्दीलियां हो जाएं, इससे बॉडी को या बॉडी की इंटरनल कंडीशन को, अंदरूनी हालात जो भी होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो अगर बॉडी आपकी इंटरनली इक्विलिब्रियम पर है, तवाज़ुन में, हर चीज़ अपनी जगह एक प्रॉपर अमाउंट में मौजूद हैं और वो बरकरार हैं, तो इसका मतलब है कि ये होम्योस्टेसिस है, जिसमें बाहर की कोई भी आपके माहौल से आने वाला कोई भी फैक्टर आपकी बॉडी पे कोई तब्दीली नहीं डाल सकता. सो दिस इज़ द मेन डेफिनेशन ऑफ होम्योस्टेसिस. नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज एग्जाम्पल. सम ऑफ द एग्जाम्पल्स विल ऑल्सो बी कोटेड हियर, in which two examples are here important. Number one, first example is your core temperature of human body. So what is the human body temperature? It is 37 degrees Celsius. So this is the main or core or normal body temperature of the human body, which remains at about this much temperature despite fluctuation. What is the meaning of fluctuation? Changes. Fluctuations mean changes इन द सराउंडिंग एयर टेम्परेचर. बेशक आपका जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, यानी आपके इन्वायरमेंट का जितना भी टेम्परेचर हो, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, आपके बॉडी के टेम्परेचर पे उस टेम्परेचर का कोई असर नहीं हो सकता जब तक कि आपका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस एक होम्योस्टेसिस पर कायम है, यानी बरकरार है. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस एग्जांपल? दैट इफ़ योर बॉडी टेम्परेचर इज़ नॉर्मल, दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस, then despite the changes which are taking place in the environmental temperature, your body temperature will never change. Second example is related to the blood glucose level inside your body. Blood glucose level, क्योंकि ये वो लेवल है, ये वो अमाउंट होती है जो कि इंडिकेट करती है कि अगर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज आपके ब्लड में आ जाए, so it can be cause the disease called diabetes mellitus. I think you are familiar with the name of the disease, sugar. So sugar की बीमारी जो होती है वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल से बढ़ने की वजह से होती है. Now
In this example, we can also mention the homeostasis in this way, that blood glucose level remains about 1 gram per liter. What is the normal amount of blood glucose? It is 1 gram per liter, which indicate कि आपके 1 लीटर ब्लड के अंदर कम से कम 1 ग्राम जो है वो ग्लूकोज लेवल होना चाहिए, विच इंडिकेट्स द नॉर्मल रेंज. और इसी तरीके से अगर हम जहन में रखें तो हमारा जो तकरीबन अप्रॉक्सीमेट ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड की अमाउंट होती है, जो वॉल्यूम होता है, वो अप्रॉक्सीमेट एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी में 5 लीटर्स के करीब होता है. सो फाइनली वी कैन से एटलीस्ट 5 ग्राम्स जो है वो ग्लूकोज का लेवल होगा, तभी आपका जाके एक नॉर्मल रेंज बनेगी ब्लड ग्लूकोज की. अब अगर आप इस सूरत में बहुत ज़्यादा ईटिंग अ मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट, यानी आप बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाते हैं, आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग जो है वो फूड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे क्या आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या जो है वो इंक्रीज़ होने के चांसेस होंगे कि आप कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, आप मीठा खाने के शौकीन हैं. तो ब्लड ग्लूकोज लेवल चूँकि होम्योस्टेसिस पर अगर मेंटेन है, यानी आपकी उस लेवल पे मेंटेनेंस इक्विलिब्रियम पर कायम है, तो जितना भी आप मीठा खा लें आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल पर कोई असर नहीं पड़ेगा. सो ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है होम्योस्टेसिस आपकी बॉडी के लिए, कि ये आपके बॉडी की इंटरनल कंडीशन, जिसमें चाहे आपका बॉडी टेम्परेचर हो, चाहे आपके बॉडी के एंजाइम्स हो, या ब्लड ग्लूकोज लेवल, या कोई और भी डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं जो कि आपकी बॉडी में मौजूद होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ये तमाम चीज़ें आपकी अगर होम्योस्टेसिस पर मौजूद हैं तो आपकी बॉडी के अंदर कोई इंटरनल चेंजेस नहीं होंगी. इसके बावजूद कि आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी आपके बाहर से आने वाले जो फैक्टर्स हैं, वो आपके इन फैक्टर्स को या इंटरनल कंडीशंस को तब्दील करने की कोशिश करेंगे. लेकिन अगर आप होम्योस्टेसिस पर कायम हैं, ये इसी तरह की बात है कि जैसे अगर आपने एक मुसम्मम इरादा कर लिया है, पक्का इरादा कर लिया है, और अब आप उस इरादे को कायम रखना चाहते हैं, तो कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत सिवाय अल्लाह ताला के उस इरादे को नहीं तोड़ सकती. बिल्कुल इसी तरह आपकी बॉडी की इंटरनल कंडीशन अगर इक्विलिब्रियम पर बरकरार हैं, तो बाहर से आने वाली कोई भी, यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आने वाला कोई भी फैक्टर आपकी उन तब्दीलियों का सबब नहीं बनेगा, यानी इंटरनल कंडीशन को तब्दील नहीं करेगा. नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज़ अबाउट significance or importance of homeostasis. What is the importance of homeostasis? Now, our body or human body cells need the internal environment in which conditions do not change much. So, हमारे बॉडी को अगर होम्योस्टेसिस की ज़रूरत होती है तो क्यों? क्योंकि हमारी तमाम इंटरनल जो कंडीशंस हैं उनमें इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं होती, और एक स्टेबल इंटरनल कंडीशन, यानी एक होम्योस्टेसिस पर कायम होने वाली जो आपके बॉडी की हालत होती है, जिसको हम स्टेबल इंटरनल कंडीशन भी कहते हैं, जिसमें ना तो आपके बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है और ना ही आपके शुगर लेवल जो है वो बढ़ती है, चाहे बाहर का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ रहा हो या आपके मीठा खाने की जो आदत है उसके बावजूद भी आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ रहा होता. तो ये स्टेबल इंटरनल कंडीशंस ही होती हैं जो कि आपकी बॉडी को रेगुलेट करती हैं, आपकी बॉडी के उन तमाम इंटरनल कंडीशंस को बढ़ने नहीं देती. तो ये किसकी वजह से? ये होम्योस्टेसिस की वजह से. और ये क्यों ज़रूरी है, क्यों आपके लिए कहा जाता है कि होम्योस्टेसिस का प्रोसेस बहुत ही सिग्निफिकेंट है? क्योंकि जितने भी आपके बॉडी के अंदर फंक्शंस होते हैं वो एंजाइम्स की मदद से होते हैं, यानी बहुत सारे आपके बॉडी के एंजाइम्स होते हैं जिनको बेसिकली काम करने के लिए 37 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत होती है, जो कि बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है फॉर द मैक्सिमम वर्किंग ऑफ द एंजाइम. तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी एफिशिएंटली काम करे, यानी एफिशिएंटली कैसे काम करेगी कि जब उसके एफिशिएंट फंक्शनिंग होगी किसकी? उसके एंजाइम्स की जो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं. सो एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स बेसिकली रिक्वायर्स a balance, and this balance actually provides by homeostasis. So I think it is clear to you now. Now some main examples of homeostasis. This will become your next heading under homeostasis.
some common examples of homeostasis. The first one is osmoregulation. Osmoregulation. What is the meaning of this word or process, osmoregulation? Osmoregulation is basically the maintenance of amount of water, and salts in your body fluids. And what are these body fluids? These are two types. One which is present in the form of blood in your blood vessels, and the second body fluid is called tissue fluid, which is present in the tissue or your different lymphatic tissues, that is also called, and it is basically called the lymph as well. So what is osmoregulation? By name it is clear that osmo is related to the word osmosis, and regulation is the meaning, having meaning maintenance. So if the amount of water and salts are regulated in your body or maintained in your body, then this process is called osmoregulation. Now, in which areas of your body these water and salts have to be maintained? So these regulation actually occurs in your body fluids. There are two types of body fluids in your body. Number one, blood, and number two, tissue fluids. Another important thing that we know that the relative amounts of water and salts in body fluids and inside cells control the processes of diffusion and osmosis. So why these, or especially osmoregulation, is important? Because whenever the water and salts are controlled or are regulated, then actually they are controlling the processes of diffusion as well as osmosis. So this point is important regarding osmoregulation, that why these processes are important inside your body. And again I must say that these are the processes which are effectively, efficiently and essential for the functioning of the cells, that without these two processes you cannot regulate the water and salts in your body, as well as these two processes are also important for the proper functioning of your cells, that cells cannot do their activities without these processes, because these are the transport processes of your body, as you have read before in your grade 9 in this chapter cells and tissues. Clear? Second example of homeostasis is thermoregulation. Thermoregulation. Now what is the meaning of thermoregulation? Thermo word comes from therm, and meaning of therm is heat, or you can also say temperature. As you know, your body temperature is 37 degrees Celsius, which is the optimum temperature for the functioning of different enzymes. So here I'll write first definition of the thermoregulation. So maintenance, we always use the term maintenance first, because the maintenance mean the regulation, that is homeostasis. So maintenance of internal body temperature. Now this time internal body condition, that is which is body condition now we are describing. So internal body, instead of condition we will write temperature. So internal body temperature, and you can also mention here at equilibrium, is called thermoregulation. So the maintenance of internal body temperature in balance or at equilibrium is called thermoregulation. So this is your definition of thermoregulation.
Now here you can also write the example of thermoregulation, which is very familiar. And what is that example? It is the human body temperature, that is the optimum temperature required for the best working of or efficient working of enzymes of your body. So basically this much temperature, that is 37 degrees Celsius, which in Fahrenheit you can also write 98.6 degree Fahrenheit. Clear? So this much temperature is required inside your body for the proper functioning of enzyme. इसका मतलब ये हुआ कि थर्मोरेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके बॉडी की इंटरनल बॉडी की जो कंडीशन होती हैं वो टेम्परेचर के लिहाज से एडजस्ट हो जाती हैं, यानी मेंटेन हो जाती हैं. इस बॉडी टेम्परेचर को जिसमें हमने कहा कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, क्या सिग्निफिकेंस आपको नज़र आती है कि एंजाइम्स ऑफ बॉडी वर्क बेस्ट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर विच इज़ बेसिकली कॉल्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर. व्हाट इज़ दिस 37 डिग्री सेल्सियस कॉल्ड? इट इज़ योर ऑप्टिमम body temperature. Why the name optimum given to it? Because what is the meaning of optimum? Optimum means basically the maximum. Optimum means maximum temperature that is required by or inside your body for the best working of your body enzymes. And here we also add any change in the body temperature may affect the functioning of enzymes as well. और अगर किसी भी वजह से ये फ्लक्चुएशन आ जाए, what is the meaning of fluctuation? There is a word normally used here. So fluctuations mean change. अगर किसी वजह से भी आपके टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन हो जाए, इसमें तब्दीली हो जाए, जैसे ये 37 डिग्री सेल्सियस है, 35 हो जाए या 39 हो जाए, 40 हो जाए, तो all these changes refer to that your main homeostasis, that is the thermoregulation, is disturbed. Now due to the disturbance of this whole process, what will affect or what will be the effect produced on enzyme, your body enzyme? So your body enzymes will not function properly. So this is the side effect if the fluctuation occurs. The next example of homeostasis, that is number 3, is excretion. Excretion. What is this process about? It is basically इखराज का अमल इखराज भी इसको कहते हैं, बाहर निकलना, जैसे खारिज होना. So all these words in Urdu can describe the process of excretion. बाहर निकलना, खारिज होना या इखराज का अमल. Now definition you have to write down first. So it is a process of homeostasis. It is a process of homeostasis in which the metabolic waste that is extra waste materials are eliminated. If you have any problem in this word eliminated, you can also use the term removed from body to maintain the internal condition at equilibrium. To maintain internal condition at equilibrium. So this process, that is excretion, is about, again we can say, is an example of homeostasis. It is a process of homeostasis in which what happens, that your body undergoes different metabolic activity. आपकी जिस्म के अंदर जो different metabolism हो रहा होता है या different metabolic processes हो रहे होते हैं, चाहे उसमें digestion हो, कोई भी अमल हो, उसके नतीजे में आपके बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म के मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं. वेस्ट का मतलब ये है कि ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको
आपकी बॉडी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, या आपके इन वेस्ट की वजह से बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो सकता है। सो इन वेस्ट का आपकी बॉडी से निकलना ज़रूरी होता है। सो दे आर एलिमिनेटेड, दैट इज़ रिमूव्ड, दैट इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एलिमिनेटेड, एक्सक्रीटेड और रिमूव फ्रॉम योर बॉडी। लिहाजा इनका जिस्म से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है। और इसका रीज़न उन्होंने यही कहा कि ताकि आपके बॉडी एक इक्विलिब्रियम कंडीशन पर या एक इक्विलिब्रियम स्टेट पर मेंटेन हो जाए, बरकरार हो जाए। तो आपके जिस्म के अंदरूनी हालात को होम्योस्टेसिस पर बरकरार रखने के लिए भी ये प्रोसेस एक्सक्रीशन बहुत अहम है। नाउ यू हैव टू राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। व्हाट आर दोज extra materials which are produced during different metabolic activities inside your body? So metabolic waste. So metabolic wastes are basically, or meaning of this metabolic waste, that any metabolic waste or any material, you can write any material that is actually produced during body metabolism or during different metabolic activities. During body metabolism. What is metabolism? It is a process through which different types of activities or the functions are proceeding in your body. So during metabolism, and that may harm the body as well. That may harm the body. So what is metabolic waste, or what are metabolic wastes? These are basically the extra materials that normally produced during different metabolic activities in your body, and after their production, if they will remain or they will stay in your body, they can harm your body. They can cause different or serious complications in your body. So they must be eliminated from your body. Otherwise, your body will be in severe sort of danger. Now, what are the examples of these metabolic waste? You can also write here some of the waste materials in which gases are very important, but which one? That is carbon dioxide. As you know, the carbon dioxide is produced in your body due to the metabolic activity. And what is that metabolic activity which your body performs? So it is respiration. So what is the waste product of respiratory process? That is this metabolic process. So it is carbon dioxide. So this carbon dioxide must be released or must be removed from your body. Another waste materials can be the excess water. Excess water. What is the meaning of excess water? इजाफी पानी, आपकी बॉडी में पैदा होने वाला ऐसा पानी जो कि जिसकी आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, इसको निकल जाना आपकी बॉडी से ज़रूरी है, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग हो, चाहे इन द फॉर्म ऑफ यूराइन हो। क्लियर? जिस तरह से आपको गर्मियों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, स्वेट आता है, तो उसमें भी आपका ये एक्सेस वाटर रिमूव हो जाता है, क्योंकि इस वाटर की भी आपको शायद इतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी आपकी बॉडी में जो नॉर्मल रेंज में जितना पानी चाहिए होता है और जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए होता है उसकी ज़रूरत होती है। इन द सिमिलर मैनर देयर इज़ अनदर नाइट्रोजनस मटीरियल, यू कैन से nitrogenous waste, which also be included in metabolic waste, and these nitrogenous waste are actually produced during different life process or metabolic activity inside your body. Next topic is homeostasis in plants. That plant also respond to their environment. They also need to balance their internal condition at equilibrium. So for this purpose, plants respond to their environmental changes and keep their internal conditions same or constant. What is the name of this constant process? It is called homeostasis.
So plants apply different mechanism for the homeostasis of water and along with some other chemicals such as oxygen, carbon dioxide and nitrogenous materials. Nitrogenous materials are those things, those substances which contain nitrogen in them. One of the example which is common one is ammonia. So basically all these are the metabolic waste for the plants, and to some extent these metabolic waste are removed from the plant body in order to keep their body at equilibrium, and this process is called homeostasis. First we will talk about number 1, that is removal of extra carbon dioxide as well as oxygen from the plant body. That how these gases are removed from the plant body as an extra waste materials. So first I am going to discuss the extra carbon dioxide, that how this carbon dioxide is removed by the plants. Normally the removal of carbon dioxide depending upon the situations. For example, during daytime we can apply the situation in this manner, that during daytime. What is the meaning of this time? When the sunlight or the light is available. So in daytime carbon dioxide basically produced during cellular respiration. When plants respire or plant cells respire by the meaning of this process called cellular respiration, then they actually produce carbon dioxide. So carbon dioxide is produced during cellular respiration in plants. So basically this process not only responsible for producing carbon dioxide but also requires oxygen for its proper functioning. So during this process carbon dioxide is not only escaped, it is released, but also used in the process called photosynthesis. So at a time the plant, that is ultimately the processes are taking place side by side, that respiration is also taking place along with the photosynthesis. So once the carbon dioxide is produced through cellular respiration, it is at once used for the photosynthesis. So it is not a waste gas, it is not a waste product, because as it is released during the process of respiration, it is ultimately used in the process of photosynthesis. But the situation is changed for plants at night. What happens at night? So situation is changed. अब सिचुएशन क्या है कि रात का वक्त है, पहले दिन का वक्त था, दोनों प्रोसेसेस हो रहे थे साथ साथ, यानी आप कह रहे थे कि रिस्पायरेशन भी हो रहा है और दूसरा प्रोसेस जो दिन के वक्त हो रहा था वो फोटोसिंथेसिस था. अब रात के वक्त क्या हो रहा है? सो एट नाइट व्हाट हैपन्स दैट द कार्बन डाइऑक्साइड इज सरप्लस. अब कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कह रहे हैं कि ये सरप्लस गैस बन गई है. व्हाई इट इज कॉल्ड अ सरप्लस गैस? because it has no utilization at night. Reason again, because there is no utilization of carbon dioxide at night, which indicates that the process of photosynthesis is not taking place at night in the plants. So whenever the plant respires, it only produces carbon dioxide, and this carbon dioxide is not used in photosynthesis because photosynthesis is not taking place at night. So what happens to this gas? It is not utilized. It is a surplus gas. It is a surplus material now, product. It is a waste product. So
plants do not require this carbon dioxide for their remaining processes. That's why we can call it a surplus gas. So it has to be removed from the tissue cells of the plant by a process known as diffusion. And in leaves and young stem, we can also say that this carbon dioxide actually removes out through special openings which are called stomata. So the removal of this gas is occurred by a process known as diffusion, and the thing that is the spores, simply you can say pores, which are responsible for the releasing this gas are called the microscopic pores called stomata, present in the leaves and young stems. Now in roots, somewhat you can say the process is different. Actually, diffusion occurs, but it doesn't look like that stomata are present there, because the roots are the lower most part of the plant. So the general root surface, what are these general root surface? Which are present on the upper surface of the root, and these are called root hairs. So these root hairs are responsible for removing this carbon dioxide during cellular respiration by a process known as diffusion. So these are two different structures which are actually required by the plant as their organs, as their smaller parts, which are responsible for releasing carbon dioxide from their body tissues or cells. The next gas that has to be removed from the plant body is oxygen. So how plants remove its extra oxygen? How plants remove? So oxygen basically produced in mesophyll cells during daytime. Here we can also apply the same phenomena during daytime and at night. But in simple you can listen that, as you know, that plants, or especially the leaves of plant, have mesophyll cells in them. So I am drawing that mesophyll cells in this way, that these are the mesophyll cells in the or inside the leaves, having chloroplast in them. These are the dotted structures are called chloroplasts. Not only these sort of mesophyll cells, but also some rounded or spongy mesophyll cells are also present inside the structure of leaf. Cleared? Now, these mesophyll cells carry out photosynthesis during daytime, and due to this process, that is the photosynthesis, as you know very well, carbon dioxide is used and oxygen is produced, and this oxygen during the process of photosynthesis is basically called byproduct. You can also call it the waste product in some manner. So during the process of photosynthesis, as you can see, that oxygen is produced as a byproduct, and after its utilization in the cellular respiration, that it is also required by the plant for the process of respiration. सांस लेने के लिए भी ये ऑक्सीजन पौधे को फौरी तौर पर चाहिए होती है. तो पौधा क्या करता है? फोटोसिंथेसिस के अमल में जब वो अपनी फूड मेकिंग प्रोसेस कर रहा होता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो वो एज अ सरप्लस गैस यानी एज अ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है. लेकिन साथ साथ पौधे का हर सेल सांस भी ले रहा होता है, तो वो ऑक्सीजन उसको सेलुलर रिस्पायरेशन यानी सांस लेने के अमल के लिए भी फौरी तौर पर चाहिए होती है. लिहाजा इसके लिए क्या करते हैं मीज़ोफिल सेल्स? मीज़ोफिल सेल्स उस ऑक्सीजन को जो कि इनके अंदर प्रोड्यूस हो रही होती है अलॉन्ग विद देयर फूड, आहिस्ता आहिस्ता यूँ समझ लें कि वो उसको रिमूव करना शुरू कर देते हैं. एंड दिस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन actually not only removed but also it is provided to the other cells
for cellular respiration. And when this is surplus means when it becomes extra as a byproduct, then it has to be eliminated from the plant body or leaves through special structure or pores or opening which are called stomata. These pores are called stomata. I think you are familiar because you have done it in last chapter. So these stomata are actually carrying out or carry these oxygen or this oxygen outside the body of the cells or plant's body. You can also say plant tissues. So mesophyll cells remove this extra oxygen from their cells, and stomata or stoma carry all this oxygen or amount of oxygen outside the plant body. In this way, the extra oxygen is removed by the plant body, and it also necessary or essential for the maintenance of homeostasis in their body. The next heading is removal of extra water. Removal of extra water. So, during the process of cellular respiration, as we know that what happens during the process of cellular respiration, that food is broken down in the presence of oxygen to produce carbon dioxide and water. So not only this water is important for the plant's body function, but also somehow we can say it is extra water as well. So this some of the extra water in the plant is collected, is deposited in xylem tissues of the plants. So we know that plants obtain water from the soil. यानी हम कह सकते हैं कि पानी कहाँ से आता है, पानी कौन सी चीज़ है जो कि लेकर प्लांट्स तक पहुँचता है. तो पानी प्लांट्स के अंदर बेसिकली सॉइल से आता है. कहाँ से आता है? सॉइल से. बिकॉज सॉइल मिट्टी के अंदर पानी एक थिन फिल्म की शक्ल में मौजूद होता है और वहाँ से प्लांट अपने लिए इस वाटर को रूट्स के ज़रिए एब्जॉर्ब करती हैं. रूट के स्पेशल पार्ट्स कौन से हैं? ये रूट एंड रूट हेयर्स. And this basically produce this water not only actually supplied by the plant or supply in the plant through soil or from soil, but it also produces due to cellular respiration. So another source of this water is cellular respiration. कि सांस लेने के अमल में भी एक्स्ट्रा वाटर प्लांट के अंदर प्रोड्यूस होता है. So there are two sources of water. Number one, soil, and number two, cellular respiration. Now plants store large amount of water in their cells for turgidity. So why do you think that water is essential? Because water not only essential for different functioning of the plant activities or plant metabolism, but also it is necessary for making the plant turgid. Turgidity, that is also called. यानी अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज़ टर्जिडिटी, तो प्लांट का जो एक पूरा स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये रूट्स और स्टेम पर मुश्तमिल होते हैं, इसमें पौधे के लीव्स, स्टेम्स, जो भी इसके हिस्से हैं, उनको एक तरीके से इरेक्ट रखना या स्ट्रेट रखना कि वो किसी भी मौसमी हालात में टूट ना सकें, उनके स्टेम जो हैं वो एक तरफ से बेंड ना हो जाएं. तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? जो प्लांट को इरेक्ट या स्टैंडिंग पोजीशन में रखता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टर्जिडिटी. सो फॉर दिस प्रोसेस दैट इज टर्जिडिटी और टू मेक द सेल्स टर्जिड, व्हाट इज बेसिकली वाटर डज. वाटर क्या करता है? वाटर सबसे पहले सॉइल से पौधा अपने लिए एब्जॉर्ब करता है और इसमें से कुछ अमाउंट में जो वाटर है वो सेलुलर रिस्पायरेशन में भी प्रोड्यूस होता है. और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि ये वाटर पौधे का कौन सा हिस्सा सॉइल से एब्जॉर्ब करता है, तो हम यहाँ इस तरह से भी बता सकते हैं कि रूट हेयर्स ये काम करती हैं. अब वाटर जो है वो क्यों चाहिए होता है प्लांट्स को? क्योंकि जितने प्लांट्स के सेल टर्जिड होंगे, तने हुए होंगे, फूले हुए होंगे, उतने ही प्लांट अपनी पोजीशन पे खड़ा रहेगा. अदरवाइज़ अगर ऐसा ना हो
पौधे के अंदर ये पानी ख़त्म हो जाए तो पौधे की हालत कुछ ऐसी होगी कि वो बिल्कुल मुरझा जाएगा। ये मुरझा जाने वाली कंडीशन पौधे की क्या है, जिसमें सेल्स के अंदर पानी की कमी हो गई है, लिहाजा वो विल्ट कर गया है, विल्टिंग हो जाएंगी लीव्स की, और साथ साथ जो स्टेम है वो भी स्टैंडिंग नहीं रहेगा, इरेक्ट नहीं रहेगा। So not only this, but also if we are talking about the significance of water in the form of turgidity, we can also talk about the removal of this extra water, that some of the amount of water should be or must be released from the plant, otherwise it can cause some problems, but normally the problem doesn't appear. ज़्यादातर हमने देखा है कि एक्स्ट्रा वाटर अगर प्लांट्स के अंदर जमा भी हो जाए तो इतना सीरियस कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। एनीवेज, सो देयर आर टू प्रोसेसेस विच आर इन्वॉल्व हियर फॉर द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी। नंबर 1 ट्रांसपिरेशन और ट्रांसपायरेशन, एंड नंबर 2 इज ग्यूटेशन। ग्यूटेशन। नाउ व्हाट इज ट्रांसपायरेशन? It is basically the loss of water from the aerial parts of the plant or from plant surface in the form of vapors, or water vapors you can also call it, in the form of vapors. ट्रांसपायरेशन का अमल एक ऐसा अमल है जिसमें पौधे के अंदर पैदा होने वाला इजाफी पानी लॉस होना शुरू होता है, रिलीज़ होना शुरू होता है। किस शक्ल में? इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। एंड व्हाट इज़ ग्यूटेशन? ग्यूटेशन अगेन अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल फॉर द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर, बट दिस प्रोसेस नॉर्मली अकर्स इन सम ऑफ द प्लांट्स. So some plants such as grasses, cabbage, जिसे आप बंद गोभी भी कहते हैं, cabbage, and some other plants basically perform the process of guttation. They perform this process by means of special kind of structure in them, but also we can say that actually this water forces out through their special pores, and where these pores are present, for example, I'll give you the structure of a leaf of such plants. For example, this is the structure of a leaf from where the guttation process removes the plant extra water. So basically these leaves, or this leaf has some special pores at the edges, as well as these are the edges where I am making these dots, and tips of the leaves as well. And what happens to the water? Water forms or aggregate in the form of drops here. An appearance of drops of water on the tips or edges of leaf is basically called guttation. So these microscopic pores which are present, or special pores present at the tips as well as the edges of this leaf, or many other leaves of the grasses and cabbage, are basically responsible for removing extra water, and this water is appeared in the form of small drops. Small drops are appeared at the edges, and finally it normally the water drops are falling down. So in this way extra water is also removed by the plant body. Now as we know that at night transpiration, the process of this, that is transpiration, usually does not occur, because most plants have their stomata closed, because transpiration occurs through the special openings called stomata. If these stomata become closed, then what happens to the extra water? How does it remove? Is it possible? No, you can say no. If there is high water content in the soil, that is, if water contains or water in the soil is high,
then water enters the roots and is accumulated in the xylem vessels. So as we can see that in transpiration at night, stomata remain closed. So after their closing, what happens that the high amount of water is entered in the plants and accumulate or collected in their special kind of tissues that are reserved for water called xylem tissues. Xylem tissues. So extra water is absorbed or extra water is collected in xylem tissues. Now there are two processes as you have seen. The first process is called transpiration and the second process is called guttation, that is normally used for the removal of extra water. Now there is another term used, dew, जिसे आप उर्दू में शबनम के यानी पानी के शबनम के कतरे कहते हैं. अब ये पानी के कौन से कतरे होते हैं या ड्रॉप्स होते हैं जिनको हम ड्यू कह रहे हैं. सो ग्यूटेशन इज़ नॉट टू बी कंफ्यूज्ड with the term dew, which actually what is dew? Dew actually forms, it is the condensed basically form, and it condenses from the atmosphere onto the plant surface. It is the condensed form of water. Dew is formed due to the condensation of water vapors, from the atmosphere or environment, onto the plant surface. But this water now, not the gaseous water, now it becomes liquid water in the form of drops which can be visible to us. So liquid water is actually formed due to the process called condensation, and the condensation means, what is the meaning of this process? In which any vapor of the liquid changes back into the liquid once again. यानी लिक्विड की जो आपकी गैशियस फॉर्म होती है, वेपर्स की शक्ल होती है, उसका दोबारा से लिक्विड फॉर्म में आना कंडेंसेशन कहलाता है. सो गैस फेज का लिक्विड फेज में तब्दील होना कंडेंसेशन का अमल है. और ड्यू उसी सूरत हाल में आप कहते हैं कि इट इज़ नॉट द रिमूवल ऑफ वाटर. ये वो प्रोसेस नहीं है कि जिसमें पानी पौधे से रिमूव होता है. एक्चुअली ये वो पानी है जो इन्वायरमेंट यानी एटमॉस्फेयर से प्लांट की सरफेस पे आता है. पौधा इसको रिमूव नहीं करता. क्लियर? सो इट इज़ नॉट द प्रोसेस including in homeostasis for the removal of extra water. Fourth type of metabolic waste which are actually removed by the plant will be given in the form of heading removal of metabolic waste. Removal of metabolic waste. As we have discussed, first 3 points related to the removal of carbon dioxide, oxygen and water. Now we are giving you the next concept of removal of different metabolic waste which are produced in the plant body during different metabolic activities. For this purpose you have to give some side headings, starting from the very first metabolic waste, that is number 1. And what is the name of this metabolic waste? Calcium oxalate. Calcium oxalate. So plants deposit many metabolic waste in their bodies as harmless insoluble materials, because some of these metabolic waste are not giving any harm to the plant. They remain insoluble but they are harmless. What is the meaning of harmless? They do not give any harm. They are actually they are not responsible for giving any disadvantage for the plants.
And one of the example of that harmless material is calcium oxalate, which is actually collected in the form of crystals. How does it normally form or appear or stored? In the form of crystals, where in the leaves and stem of many plants. So calcium oxalate is that metabolic waste in the plants which is actually stored or deposited in the plant in the form of crystals, in the form of solid thing, and these crystals are actually deposited in the plant leaves and stems. Cleared? One of the example where the calcium oxalate deposited in plant is tomato. I think you have seen the tomato. Cleared? So जिस तरह से आपने एक टमाटर देखा है, तो टमाटर जो है वो अपने अंदर कौन सा मेटाबॉलिक वेस्ट जमा करता है? इसे कैल्शियम ऑक्सलेट कहते हैं. एंड नॉर्मली इनसाइड द tomatoes, these metabolic waste are aggregated in the form of crystals. बाकायदा तौर पे एक प्रॉपर या डेफिनेट शेप की शक्ल में ये क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं. So you can make your crystals in this way. So they have a definite shape. That's why they are called crystals. That is the solid thing. Now some other metabolic waste or extra materials or waste material removed by the plant body include number 2, because the first one is calcium oxalate, is resins. Then we have the third one, gums. Fourth one, latex. And the fifth one is mucilage. So you have to mention the names of the plants through which or in which these all metabolic waste are removed. So first one, that is the resins, are removed by which plant? Called coniferous trees. What are these coniferous trees? Coniferous trees are basically found in hilly areas. ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों के दरख्त हैं जो कि ज़मीन से आसमान तक जो है वो ऊंचे होते हैं. यानी अगर आप इनको देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इनकी हाइट होती है, जिसमें हमारे पाइन के ट्रीज़ ज़्यादातर शामिल हैं. पाइन, even you are familiar with the name deodar. So some of these trees which are very long, that is they have much height as compared to the other trees, are included in coniferous trees, and these trees produce metabolic waste in the form of resins. Next, metabolic waste, gums, are normally released by another type of tree or plant that is called कीकर, जिसमें बाकायदा तौर पे आपने देखा होगा कि इस तरह के स्पाइन्स निकले होते हैं, हुक्स या स्पाइन निकले होते हैं. क्लियर? सो बेसिकली कीकर का पौधा या दरख्त भी अपने अंदर एक मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस करता है जिसका नाम गम्स है. नेक्स्ट, latex, which is removed by rubber plant. इन प्लांट्स में जो कि ज़्यादातर आपके प्रोड्यूस होते हैं आपके फॉरेस्ट एरिया में, और बाज़ दफ़ा इन्हें फार्म्स में भी कल्टीवेट किया जाता है. नॉर्मली इन प्लांट्स में पैदा होने वाला बेकार जो मादा होता है या मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको आप लेटेक्स कहते हैं. लास्ट वन, म्यूसिलेज, इज एक्चुअली रिमूव्ड बाय 2 different plants. The first one is called the carnivorous plants,
It is carnivorous. Okay, carnivorous plants as well as ladyfinger. Ladyfinger. Now, basically, the carnivorous plants include some different types of plants which depend on or other insects or for their food, and they get their nitrogenous material or nitrogenous requirement from those insects. These plants include pitcher plant, and you can also write sundew. There are other examples as well, but I'll here quote only these two examples, so you have to note down it. And then we have another example of plant which actually secretes mucilage, and it is ladyfinger. ladyfinger को उर्दू में भिंडी भी आप कह सकते हैं, भिंडी भी कहा जाता है. तो भिंडियों के अंदर भी आप देखें कि अगर आपने कभी लेडी फिंगर्स काटी हों तो आप जब उनको अच्छी तरह से वॉश करके काटना शुरू करते हैं तो उसके अंदर से भी एक थिक सा पेस्ट निकलता है गम की शक्ल में, या यूँ समझ लें कि स्टिकी आपको लिक्विड रिलीज होता हुआ महसूस होता है. सो दैट इज़ एक्चुअली म्यूसिलेज. There is an important fact about the calcium oxalate regarding their removal from the plant body. So as we can say that in some trees which shed their leaves yearly, their excretory products are removed from their body during leaf fall. And what is leaf fall? आपने देखा होगा कि अक्सर पौधों में या दरख्तों में पत्तों के झड़ने का अमल होता है. पत्ते झड़ जाते हैं, पत्तों के झड़ने का अमल. और पत्तों के झड़ने का ये अमल जिसमें पत्ते ग्रीन से येलोइश होने के बाद, यानी येलो होने के बाद गिर जाते हैं, खुद ब खुद ट्री जो है वो उनको शेड कर देता है, गिरा देता है. तो एक्चुअली इससे पौधे को क्या फ़ायदा पहुंचता है कि लीफ फॉल बेसिकली एक यूँ समझ लें कि एक ऐसा फंक्शन बन जाता है उनके लिए जिससे वो अपने जो एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं, जिसमें कैल्शियम ऑक्सलेट शामिल है. क्लियर हो गई बात आपको? सो बेसिकली द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी मटीरियल और सम ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट इंक्लूडिंग कैल्शियम ऑक्सलेट इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ लीफ फॉल. If the leaves are not shed, for example, अगर लीफ नहीं गिरते, अगर लीफ नहीं झड़ते, वो पीले भी हो रहे हैं और दोबारा से उनमें एक ग्रीनरी भी आ रही है, उन पर दोबारा से एक बाहर का मौसम भी आ रहा है, तो इस सूरत हाल में अगर कैल्शियम ऑक्सलेट उन पत्तों में रह जाए तो वो कभी भी एक हार्मलेस क्रिस्टल के तौर पे ही रहेगी, कभी भी लीव्स को नुकसान या पौधे को नुकसान नहीं पहुँचाएगी. सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ द कैल्शियम ऑक्सलेट if it remains inside the leaf or plant body, so it doesn't harm your plant. So class, this is the end of today's lesson. I hope you have understood it very clearly.